Hello everyone. Today we are going to start a new topic on Indian polity. Our today's lecture is the kinds of majority under Indian Constitution. This is very important topic ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମେଜରିଟି ଚାପ୍ଟରଟି ବୁଝିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତ ଭଳି ଏକ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସରେ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେକୌଣସି ଡିସିସନ୍ ତାହା ମେଜରିଟି ବେସିସ୍ରେ ନିଆ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତାର ରିମୁଭାଲ ପାଇଁ ଅର୍ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟକୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସକୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମେଜରିଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ମେଜରିଟି ଭାରତୀୟ ପଲିଟିରେ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ chapter. The sources of this class is derived from the Indian polity book of M. Lakshmikant and also from the internet. So, the kinds of majority generally in Indian Constitution we can see there are four types of majorities are found. They are your simple majority, second is your effective majority, third is your absolute majority, and the fourth one is your special majority. Here we should discuss one by one. The first is your simple majority. This is the simplest kinds of majority. This is the majority in which lowest level of parliamentary strength is required. That is just more than 50% of total strength present and voting of the members. So here एठारे simple majority होची एक simplest kind of majority ସେଥିପାଇଁ या ना simple majority होईची। ଆମେ ଜାଣିଛେ simple majority ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର lowest level of parliamentary strength is required. Parliament ର ସବୁଠାରୁ lowest level of strength is required to pass a bill in the simple majority. Okay, suppose parliament ro ame janiche parliament ro full strength is 545 in Lok Sabha. Lok Sabha re full strength hochi 545. Suppose out of which 480 members are present but 20 members do not participate in the voting. So they are abstain from the voting. Only out of 480 members who are present, 460 members are present and voted. So here 460 is present and voting. So total number of members present and voting is 460. Here in this case the total number of votes are required to pass a bill in simple majority equals to just more than 50% of the members present and voting, that is 460 divided by 2 equals to 230 plus 1 equals to 231. So here it is important to know that the simple majority is ଆପଣଙ୍କ simple majority 460 ର 50% plus 1 total number of members present ଥିଲେ 480 ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 20 ଜଣ ମେମ୍ବର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଭୋଟିଂ ରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ କରିନଥିଲେ। କେବଳ 460 ଜଣ ମେମ୍ବର୍ସ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସୋ 460 କୁ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭୋଟିଂ ବୋଲି କାଉଣ୍ଟ କରୁ। ତ ସିମ୍ପଲ ମେଜରିଟି ଏଠାରେ କାଉଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଗଲେ 460 ର 50% ରୁ just more than 50%. It means 460 ର 50% is 230 and simple majority is here just one more than, it means 231 is the simple majority in this case.
So simple majority को आमे मध्ये functional majority कहि थाउ. Okay, because on this basis all the functions of the house has done. जेहेतु simple majority रे maximum किंबा all the major functions of the house is done, then it is called as a functional majority. Major function done हो सेति पय हमें याको functional majority बोली कहि थाउ. सो एथर कहबा को गले एथरे गोटे जिंस जानिबार अछि कि कोन से हाउस रो कार्य को चलेबा को हेले एथरे मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेंथ रो रिक्वायरमेंट अछि. से मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेंथ को हमें कोरम कहि थाउ. एठी पार्लियामेंट रे कोरम होची 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स. टोटल मेंबर्स उनकर 1/10 होची कोरम. हियर लोकसभा रो full strength is 545. Here 1/10 is 55. So 55 is the strength or the quorum which is required to operate the day-to-day activities of the house. House रो function को माने functional करिया पई आपनकर 55 जन मेंबर्स इन लोकसभा दरकार आ 25 जन मेंबर्स आपनकर राज्यसभा रे आवश्यकता अछि. यदि कोरम सैटिस्फाइड न हुए देन हाउस रो कार्य चली परिबो नाही. नेक्स्ट पॉइंट इज योर एरियाज वेयर सिंपल मेजॉरिटी इज नीडेड. सिंपल मेजॉरिटी केउ एरिया रे रिक्वायर अछि. देखिबा प्रथम आपनकर बिल्स ऑल द ऑर्डिनरी बिल्स, फाइनेंस बिल, मनी बिल एटसेट्रा. ऑर्डिनरी बिल पास पई, फाइनेंस बिल रो पास पई एवं मनी बिल रो पासिंग पई आपनकर सिंपल मेजॉरिटी आवश्यकता रहिछि. सेकंड पॉइंट इज योर नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड कॉन्फिडेंस मोशन. नो कॉन्फिडेंस मोशन एवं कॉन्फिडेंस मोशन रो पासिंग पई मध्ये सिंपल मेजॉरिटी आवश्यकता अछि. सेंसुअल मोशन आर नथिंग बट वेज ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट. एडजस्टमेंट मोशन जते सब मोशंस अछि, जते सब बिल्स अछि, वी विल डील इट इन अनदर वीडियो on the chapter of parliament chapter पढ़ला वाले सब जिंस हमें टॉपिक नबा. व्हाट इज योर सेंसुअल मोशन, व्हाट इज योर कॉन्फिडेंस मोशन, व्हाट इज योर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, व्हाट इज एडजस्टमेंट मोशन, बिल केते प्रकार, मनी बिल कोन, फाइनेंशियल बिल कोन, ऑर्डिनरी बिल कोन, गवर्नमेंट बिल कोन, प्राइवेट बिल कोन, ए सब जिंस हमें सेपरेट वीडियो रे और क्लासेस रे डील करबा. यदि हमें एते गोटा डील करबा गोटे वीडियो रे देन एटा बहुत बल्कि हे जिवो एवं टाइम टेकिंग हबो. बेटर हमें सेपरेटली डील करे हम डिटेल्स रे बुझी परिबा. देन फिफ्थ पॉइंट इलेक्शन. आपन स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर इन लोकसभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एमान को इलेक्शन पई की सिंपल मेजॉरिटी रो रिक्वायरमेंट रहिछि. रिजोल्यूशन सीकिंग टू द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट फॉर इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन एनी स्टेट्स. कोनोसी स्टेट रे प्रेसिडेंट रूल को इंपोज करबा पई पार्लियामेंट रे सिंपल मेजॉरिटी रे अप्रूवल मिलिबा दरकार. यदि पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी रे कोनोसी प्रस्ताव को पास करिकी अप्रूव दिए, प्रेसिडेंट रो रूल को इंपोज करबा पई कोनोसी स्टेट ऊपर कोनोसी प्रस्ताव को पास करे सिंपल मेजॉरिटी रे पार्लियामेंट, देन प्रेसिडेंट रूल सही स्टेट रे इंपोज होई जिवो. देन वोट ऑफ थैंक्स, प्रेसिडेंट एड्रेस और गवर्नर्स एड्रेस. हमें जानि छे प्रेसिडेंट को एड्रेस पर वोटिंग हुए. प्रेसिडेंट आपनकर अगस्त 15 होंतु, जनवरी 26 होंतु, गांधी जयंती, जनरल इलेक्शन रो फर्स्ट पार्लियामेंट रो फर्स्ट सेशन एड्रेस करे पूर्व प्रेसिडेंट स्पीच दे थांती एवं फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर रो प्रथम अधिवेशन स्टार्ट होवा पूर्व मध्य प्रेसिडेंट स्पीच दे थांती. प्रेसिडेंट को स्पीच पर गोटे वोट ऑफ थैंक्स पास हुए जाकी पार्लियामेंट रे पास हुए. सेति पई की आपनकर सिंपल मेजॉरिटी रो आवश्यकता रहिछि. देन योर under article 368 the states to have passed constitutional amendment through simple majority. What is a constitutional amendment and what are its kinds?
एटा गोटे नुआ चैप्टर रे आमे देखिबा। सो अंडर आर्टिकल 368 रे दुई प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होइथाय। गोटे होची आपनकर टू थर्ड प्रेसिडेंट वोटिंग रे एवं सेकंड कैटेगरी टी आपनकर टू थर्ड प्रेसिडेंट वोटिंग एवं 50% रैटिफिकेशन ऑफ द स्टेट। सो एठारे सेकंड पॉइंट कथा कोआ जायछि जेउथरे कि 50% ऑफ रैटिफिकेशन ऑफ द स्टेट इट इज ए वन काइंड ऑफ सिंपल मेजॉरिटी। We'll deal in it in a separate lecture video in another class. Then 8 point re under article 356 president rule यदि 356 under article 356 रे president rule को impose करबा पई simple majority रो आवश्यकता अछि। Similarly financial emergency under article 360, then under article 352 to disapprove national emergency or the disapproval of national emergency under article 352 only simple majority is required. There are some space in the constitution does not mention what kinds of majority is needed. For example, article 368 it just says that not less than half of the state legislature should ratify. So there are certain स्पेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ने किछि जगह अछि जेउथरे कि केउ प्रकार मेजॉरिटी रो आवश्यकता पड़िबो ताहा मेंशन होई नै। सो एही सब क्षेत्र रे जदि कोनोसी जगह रे किछि मेंशन होइनी देन हमें प्रिज्यूम करिबा हमें धरि नबा कि एहा सिंपल मेजॉरिटी। अनदर आउट एग्जांपल आपन को देबी आर्टिकल 78 रे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पांसिबल टू लोकसभा। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पांसिबल टू लोकसभा कथा कहिछि एवं the constitution does not say what kinds of majority are there by the council of minister. It just says the confidence of Lok Sabha. The Lok Sabha confidence ପାଇଁ କି council minister को 50% और the government को आपनकर simple majority prove करिवार अछि। केवल simple majority ही government तार निजर strength को house रे prove करे। So it is a simple majority. Then another example article 67 it talks about the removal of vice president. It says that the removal of vice president should initiated in Rajya Sabha. Vice president को removal पाई की राज्य सभा रे इनिशिएटेड हुए, राज्य सभा रे इफेक्टिव स्ट्रेंथ रे पास होबा दरकार, देन लोक सभा रे सिंपल मेजॉरिटी रे पास होबा दरकार। राज्य सभा रे इफेक्टिव मेजॉरिटी पास होबा दरकार, लोक सभा रे सिंपल मेजॉरिटी पास होबा दरकार। Nowhere mention that what kinds of majority is needed. It just only simple majority. मैं आगुर कहिछि जेउठी कोनोसी प्रकार मेजॉरिटी मेंशन हेनी हम अज्यूम कर दो दिस इज द सिंपल मेजॉरिटी। द नेक्स्ट इज योर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज जस्ट मोर देन 50% ऑफ द एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ ता कोन आपनकर एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ इज the total strength of the house is called as the absolute strength, and the 50% of the total strength or the more than 50% of the total strength is called as the absolute majority. Here the total strength of the Lok Sabha is, for example, 545 and the absolute majority is 545's 50%, just more than 50% is your 273. एठारे फुल स्ट्रेंथ जेहेतु लोकसभा 545 देन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तार 50% रु टिके अधिक आपण दैट इज योर 273. सिमिलरली द एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज योर 123. This absolute majority is politically very important because it is required to formulate government after general election. Obviously the absolute majority has very much importance in Indian political system because after every general election to formulate a new government there is 273 the majority required in the Lok Sabha. This is a absolute majority. Okay, so this is very important in Indian political perspective.
the absolute majority has very significance, very important significance. Then your effective majority. It is just more than 50% of effective strength of the house. So what is effective strength? For example, the total strength is 245 in Rajya Sabha, out of which 5 persons are died, 5 persons are resigned, and 5 persons expelled. So the total available person is 230 is effective strength. So normally ଯେତିକି person available ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ effective strength କହିବା. Effective majority ହେଉଛି more than 50% of effective strength is called as effective majority. Here in the given example the effective majority is 230 divided by 2 plus 1 equals to 116. Effective strength ra more than 50% होची effective majority. That's simple. Uses effective majority uses first uses under Article 67 clause 3 removal of vice president. The removal of vice president is effective majority in Rajya Sabha and simple majority in Lok Sabha. Already I have discussed discussion कर देइची कि vice president को removal पाई कि आपनकर राज्य सभा रे effective majority ର आवश्यकता अछि एवं लोक सभा रे simple majority ର आवश्यकता अछि. Second point is your removal of deputy chairman of Rajya Sabha. Third point, removal of speaker and deputy speaker of Lok Sabha. So for all this we need absolute effective majority. Then last point is your special majority. Every other majority is called special majority, which is not effective majority, simple majority or absolute majority. जो majority simple majority नुहे, absolute majority नुहे किंबा effective majority नुहे, that is called as a special majority. If we analyze the special majority in India, it can basically divide into three types. Indian constitution रे special majority को तीनोटी टाइप रे डिवाइड करा हिची. They are 2/3 present and voting, and that must be absolute, and 2/3 of total strength. So types of special majority in Indian constitution has been divided into three heads. Okay, so we'll deal it in one by one. The first kind of 2/3 present and voting. It means a majority of not less than 2/3 of the member of present and voting. These kinds of special majority needed under Article 249 to enable the Parliament to legislate on any subject in the state list. Normally there are, okay, for example नहीं जिबा साधारणतः हमरो 7 शेड्यूल अछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे जोंथर के तीनोटी लिस्ट मेंशन अछि. गोटे अछि आपनकर यूनियन लिस्ट, सेकंड इज योर स्टेट लिस्ट and your concurrent list. So there are different subjects that mention. Union list रे different subject mention अछि, state list रे different subject mention अछि एवं concurrent list रे ମଧ୍ୟ different subject mention अछि. State list रे जे सब subject रहिछि एता state government law बने. Central list रे जे subject रहिछि central government law बने एवं concurrent list रे both central government and state government law bananti. Okay, the central government doesn't have power to make any laws on the state subject. Similarly, the state government also do not have any power to make any laws on the central list at the normal circumstances. But there are certain provisions or special circumstances in which the central government has the power to make laws on the state list also. What are these special circumstances? For example, under Article 249, if Parliament enable to legislate on any subject in the state list, यदि Parliament under Article 249 रे आपण 2/3 president voting रे जदि provision pass करे कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट उपरे
law बनाओ, then only the central government can make laws on the state list. Then another example is your Article 312. Article 312 जो कि ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने पाई यदि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने को चाहे देन से केवल अंडर आर्टिकल 312 रे 2/3 प्रेसिडेंट वोटिंग मेजॉरिटी रे कौन से बिल यदि पास करे देन ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट हो जिवो वर्तमान हमर भारत रे there are only 3 kinds of all India services available. One is your Indian administrative service, second is your Indian police service, and third is your Indian forest service. So जदि किछि नुआ all India service create करिवो so ता ए मेजॉरिटी अंडर ही पास हो. The second kind of category is 2/3 president voting plus absolute. The basic difference between the first kind and the second kind रे आपन एब्सोल्यूट गोटे अछि जोटा कि फर्स्ट काइंड रे नाही. एब्सोल्यूट रो मीनिंग आगुरु मु कहितली कि एब्सोल्यूट मींस एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ मींस मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ जहा कि लोकसभा रे 273 एंड राज्यसभा रे 123. हियर स्पेशल 2/3 प्रेसिडेंट वोटिंग स्पेशल मेजॉरिटी रे जहाँ भी बिल पास हो that not in any case 273 रु कमिबो नाही 273 किंबा ताटो अधिक होई पारे बट 273 रु एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ रु कमिबो नाही. ओके दिस इज द सेकंड काइंड्स ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 प्रेसिडेंट वोटिंग एंड दैट मस्ट बी एब्सोल्यूट. 2/3 प्रेसिडेंट वोटिंग रे जो नंबर टी हेबो ताहा एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ रु कम हो नथो. फर्स्ट कैटेगरी रे 2/3 प्रेसिडेंट वोटिंग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी रु कम होई थाई पारे बट सेकंड केस रे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी रु कम हो नथो. एग्जांपल होउची सपोज लोकसभा रो आमे जानि लोकसभा टोटल स्ट्रेंथ होउची एक्सक्यूज मी आमे जानि छे लोकसभा रो टोटल स्ट्रेंथ होउची योर 545. ओके सपोज आउट ऑफ व्हिच 130 members are present but 120 members are present and voted. Okay, 120 members are present and voted. So 80 members are supported the bill. As 80 is 2/3 of 120, then the bill can easily be passed in the house. But ये जो 80 जो फिगर टा हैला यदि 80 जन सपोर्ट करछन्ती कोनसी बिल को 2/3 प्रेसिडेंट वोटिंग रे ताहा हाउस रे पास होई जिवो. ओके एटा एहा प्रथम काइंड्स ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी पई एप्लीकेबल बट सेकंड काइंड्स ऑफ मेजॉरिटी रे दिस इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज़ फॉर द सेकंड काइंड्स ऑफ मेजॉरिटी इट मस्ट बी एब्सोल्यूट मींस 273 हमार आवश्यकता अछि 80 जेतु अछि दिस इज नॉट एप्लीकेबल. तो बेसिकली it must be minimum 273 or more for Lok Sabha and 123 or more for Rajya Sabha. So this is a second kind of majority 2/3 president voting plus absolute. Utilization under Article 352 for extension of national emergency after once it has been imposed. For national emergency लागू हो जाइछि वर्ष पई नेक्स्ट टाइम ताको और एक्सटेंशन करे पई आ गोटे वर्ष अंडर आर्टिकल 352 रे 2/3 president voting plus absolute is a second kind of majority is required.
Second point is under Article 124 for the removal of judges of the Supreme Court and High Court. Under Article 324 removal of Election Commission of India. Under Article 149 removal of CAG. Under Article 169 for creation of Legislative Council of the State. Next, resolution in the State Assembly to create or abolish Legislative Council in the state. For the passing of constitutional amendment bills in the Parliament. So these are the several requirements of the second kind of special majority, that is a 2/3 president voting, and that must be absolute. So 2/3 of total strength. This is the third kind of special majority, that is your 2/3 of the total strength of the house. For example, under Article 61 of the Indian Constitution, to impeach the President of India, we need these kinds of special majority. Okay, this is 2/3 of the total strength, that is 545 into 2/3 in Lok Sabha and 245 into 2/3 in Rajya Sabha. It is the toughest kinds of majority given under Indian Constitution. It required a majority of 2/3 of total membership of the House. So this is all about today's class. Please like, share and subscribe the channel. If you have any doubt, then you can ask in the comment section, or you can WhatsApp me on this number. So thank you.